Hello, Acho. Let's read a given question. The question says the intensity of electric field required to balance a proton of mass 1.7 10 raised to minus 27 kg and charge 1.6 10 raised to minus 19 coulomb is nearly. Option A 1 into 10 raised to minus 7 volt per meter. Option B 1 into 10 raised to minus 5 volt per meter. Option C 1 into 10 raised to 7 volt per meter. Option D 1 into 10 raised to 5 volt per meter. So to understand this question, we need to have a basic understanding of the concept of electric field, right? So electric field basically we defined it as E is equals to force on test charge upon the magnitude of test charge, right? So this is how we defined electric field. अब यहाँ पे we can see जो force लगेगी charge के ऊपर that is been kept in some electric field, it is given by F equals to Q into E, right? From this expression we can say दिस एक्सप्रेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा. एंड वी नो के इफ पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन एंड वी आर कीपिंग अ पॉजिटिव चार्ज इन इट, सो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एफ, राइट. और अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज रख दें तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, अब बात करते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन दैट हैज बीन गिवन टू अस. सो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि वी हैव बीन गिवन के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटॉन ऑफ मास, दिस मास गिवन है, चार्ज भी गिवन है. सो वी नो के अगर हमें बैलेंस करना है, लेट्स से वी हैव अ प्रोटॉन ओवर हियर, इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट वी हैव अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और ये फोर्स कौन सी है? फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट. सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज QE. सो ये हो जाएगा QE. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट वी कैन से कि QE को इक्वल होना पड़ेगा mg को, सो दैट नेट फोर्स विल बी 0 ऑन द मास और वी कैन से द प्रोटॉन. ठीक है, सो वी कैन से दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन. हम यहाँ से E की वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट, दिस कैन बी रिटन एज mg अपॉन Q. अब m हमें गिवन है 1.7 10 raised to minus 27 into G की value we can take it as to be 9.8 meter per second square divided by Q is given as 1.6 10 raised to minus of 19 coulomb. So this result of electric field intensity E comes out to be 10.41 into 10 raised to minus of 8, right. And इसको हम थोड़ा सा further resolve करें, so it will be 1.04 10 raised to minus of 7 volt per meter. So this is the answer to the value we are getting for electric field intensity required. So यहाँ पे one might get confused के यूनिट तो इसकी न्यूटन पर कूलम होनी चाहिए थी, राइट. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास दो यूनिट्स हैं, राइट. एंड वी कैन से इट कैन बी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर की यूनिट आती है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन से, दैट इज V इज इक्वल्स टू E इंटू D, where D is the distance between the two plates we can say, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है द बिटवीन द टू प्लेट्स. लेट्स से हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज D, राइट. एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन द टू प्लेट इज गिवन बाय द रिलेशन V इक्वल्स टू ED, प्रोवाइडेड दैट E मस्ट बी अ कांस्टेंट. सो यहाँ से वी कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आएगी दैट विल बी वोल्ट पर मीटर. सो दो यूनिट है वी कैन see. So from option this we can say option A is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.